पहली न्यूज़ है पीएम लीव ऑन द टूर ऑफ नाइजीरिया ब्राजील गुयाना। तो यहाँ पे जा रहे हैं अपन और ही ब्राजील में जाएंगे तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे 19G20 समिट। ठीक है, तो सीधी बात तो ये है। एक न्यूज़ है ये जीएनयू प्लान्स टू इंटीग्रेट इंडियन नॉलेज सिस्टम इनटू करिकुलम। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज टोल्ड इट्स स्कूल्स टू इंटीग्रेट ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम इनटू देयर करिकुलम फॉर एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल इन दिस रिगार्ड्स। तो सीधी बात है, अपन को याद रखना है जेएनयू है वो यूनिवर्सिटी जिसने ये बात की है। ठीक है। एक न्यूज़ ये टॉप कोर्ट रिजेक्ट द Vedanta's PLA to review order on the Toothkundi plant. The Supreme Court has dismissed the review petition filed by the Vedanta Sterlite to reconsider its February judgment to refusing the direct reopening of the company's Toothkundi कॉपर प्लांट इन तमिलनाडु। तो याद रखना है कॉपर प्लांट इन तमिलनाडु, तो कॉपर वाला न्यूज में चल रहा है। द प्लांट वाज क्लोज 6 years ago ऑन द ग्राउंड ऑफ पॉल्यूशन। तो टूटकुंडी में जो प्लांट है वो बंद कर दिया था ऑर्डर से। ठीक है, अब उसको वापस ओपन की बात कर रहे हैं पर उसको डिसमिस कर दिया उस पीएलए को। तो बस यही है। एक ये है राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो। तो ग्लोबल पार्टनरशिप लोकल अपॉर्चुनिटीज, इसमें 9 दिसंबर को तो और इनॉर्गेशन और 10 को होगा प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव और 11 को एमएसएमई कॉन्क्लेव। ठीक है, और इसमें फिर ये सारी सेक्टर्स हैं, इनमें काम होगा। तो यही है जो राइजिंग राजस्थान समिट है। एक न्यूज़ ये है इंडिया एंड जापान साइन एग्रीमेंट फॉर द यूनिकॉर्न्स मास्ट फॉर द नेवल वारशिप। तो इंडिया एंड जापान साइन ए मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ द यूनिकॉर्न यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट, a conical structure that house antenna atop warship, increasing their stealth characteristics for the fitment of Indian naval warship under the framework of the India-Japan Defence Technology. Once implemented, this would the first export case of defence technology from Japan and the bilateral agreement. The joint statement issued after the 2+2 interministerial dialogue in August 2024 has referred to the discussion over the early transfer of the Unicorn and the related technology. अब कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, द यूनिकॉर्न इज द मास्ट विद द इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम which will help improve the stealth characteristics of the naval platform. The India's Navy is pursuing the induction of these advanced systems, which will be co-developed by Bharat Electronic Limited in India with the Japanese collaboration. The Navy said in the statement, when implemented, this would be the first case. तो अपन ने देख लिया, ये सब तो वही वाली बात रिपीट कर रहा है। तो अपन सिर्फ जो जो अपने वॉरशिप होते हैं ना उनके ऊपर एक एंटीना टाइप लगाते हैं जो जैसे उनको पकड़ जो उनके रडार वडार में नहीं आए और उन सबसे रिलेटेड एक होता है, उसको बनाने के लिए जॉइंट एग्रीमेंट है इंडिया और जापान का, उसको कहते हैं यूनिकॉर्न मास्ट। एक न्यूज़ है कि over 10 lakh senior enroll in Ayushman Vay Bandhan. More than 10 lakh senior citizen aged 70 and above had enrolled in the newly launched Ayushman Vay Bandhan, enabling them to access free healthcare benefit under the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये व्यय वंदना है ना, ये बुड्ढों के लिए है, मतलब बुजुर्गों के लिए है। अब जो 70 से ज़्यादा एज के हैं और उनको फ्री में मतलब हेल्थ केयर बेनिफिट मिलेंगे। Releasing the figure on Saturday, the ministry noted that the enrollment has been achieved within 3 weeks of the scheme's rollout by the Prime Minister Narendra Modi on October 29। 29 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी और उसके बाद 3 वीक में ऐसा हो गया है। वुमेन अकाउंट फॉर 4 लाख एनरोलमेंट अंडर द स्कीम। तो सीधी बात है, 4 लाख तो महिलाएं और 5 लाख पुरुषों ने यहाँ पे जो बुजुर्ग है उन्होंने यहाँ पे एनरोल कर दिया है। फिर एक न्यूज़ ये रिस्पाइट फॉर इंडियन कॉफी ग्रोवर्स एज ईयू ग्रांट टाइम फॉर EUDR compliance. India's major plantation sectors such as rubber, coffee have haved a sign of relief as EU Parliament has voted in favor of proposal by European Commission to delay the implementation of EU
Deforestation Regulation (EUDR), allowing growers, e- exporters, and traders additional time for compliance. Accordingly, large coffee operator and exporter must meet EUDR regulations by December 30, 2025, while micro and small grower trader have time until June 30, 2026 to comply as against the earlier deadline of December 2024. Being EUDR compliance indicate a grower's forest-based coffee produce is legal and not sourced from any deforested land and unethical cultivated. Notably, over 70% of Indian coffee are sold in EU countries, and therefore the compliance extension has direct implication on coffee player in the India. Although India has very one among the few countries which grew coffee under the two-tier thick shade of native trees, say industry player. Our coffee estates, in the addition to coffee and shade tree, has diverse flora and fauna. So Indian coffee are most sustainably grown. In spite of that, India opposed EUDR since the compliance does not incentivize sustainably grown coffee. Coffee Board of India CEO and Secretary KG Jagdisha told the Hindu. तो सीधी बात है, तो ईयूडीआर वाले हैं ना, वो अपनी अलग ही कुछ रूल रेगुलेशन ला रहे हैं कि भाई लीगल रेंट पे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। तो वही उन सब की बात कर रहे हैं। There are challenges in mobilizing the resource to invest by the small and medium size holding to EUDR compliant. The postment the postponement of the implementation of the EU deforestation regulation is expected to bow up the international market for rubber and related product in the short term. सीधी बात करें, शॉर्ट टर्म में हेल्प कर रहे हैं, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं रहे हैं. There were ambiguous and concern in the market. Now that EUDR will implemented from 2026, the international market uh, will have a positive impact in the short term. बस वही वाली बात कर रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा तो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. तो अपन को तो EUDR रखना है, किससे रिलेटेड है, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, कॉफी और इनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड है. नई नई इन पे रूल रेगुलेशन लगाए हैं, रबड़ और कॉफी और इन पे. एक न्यूज़ है ये, ऑप्टिकल बायोसेंसर रैपिडली डिटेक्ट monkeypox virus. A new variant of human mpox has claimed that live of approximately 5% of the people with a reported infection in the Democratic Republic of Congo. ठीक है. तो ये सब चीज़ों को तो हटाओ, अपन को क्या याद रखना है. तो a PCR test is expensive, require laboratory, and can take days and weeks to get result. Boston University lab has developed optical biosensor for the detecting the virus that cause Ebola or hemorrhagic fever and COVID-19 among other. The researchers use sample collected from the lesion of the patient with laboratory confirmed mpox. They incubated the sample with the monoclonal monkeypox antibodies that bind to protein on the surface of the virus. The virus antibody complex was then transferred into tiny chamber on the surface of silicon chip on the sensor that were treated to fix these nanoparticle. The shining precise wavelength of red and blue light simultaneously on the chips caused interference, which resulted in the slightly different response when the virus antibodies nanoparticle were present. A color camera was used to detect these small signal and count individual particles with high sensitivity. The biosensor assay easily discriminate mpox sample from those of other virus within 2 minutes. तो सीधी बात है, जो नैनो लेवल पे जाके जो ये बायोसेंसर है ना, उन्होंने जो mpox है इसको पकड़ लिया दूसरे वायरस से. तो सीधी बात है, जो पीसीआर टेस्ट है वो बहुत टाइम ले रहा है, 1 से 2 वीक, पर ये जो है ना बायोसेंसर, ये 2 मिनट में ही पता देता है. ठीक है, तो बस यही है. तो ये एक और देख लेते हैं अपन क्या है. तो द रिसर्चेज फ्रॉम, ये तो अपन ने देख ही लिया. बोस्टन यूनिवर्सिटी हैव नाउ डेवलप एन ऑप्टिकल बायोसेंसर दैट रैपिडली डिटेक्ट मंकी पॉक्स
virus that cause mpox. The technology could allow clini- clinics to diagnose the disease at the point of the care rather than the wait for the lab result. तो सीधी बात है, बहुत जल्दी से ही पता चल जाएगा। और अपन को बस ये याद रखना है बायोसेंसर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। एक न्यूज़ है ये कि माउंटेन लायन इन लॉस एंजल्स बिकम मोर नॉक्टर्नल। द माउंटेन लायन इन ग्रेटर लॉस एंजल्स are proactively shifting their activity to avoid interacting with cyclists, hikers, and joggers and other recreationalists. Find a study. The study found that mountain lion living in area with high level of human recreation were more nocturnal than the lion in more remote region who were more active at dawn and dusk. तो सीधी बात है, जो ये माउंटेन लायन होता है एक, जो अपने अमेरिका में मिलता है, तो जो लोगों के पास रहते हैं ना वो नॉक्टर्नल हो रहे हैं। नॉक्टर्नल यानी जो रातों में जगते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग दिन में घूमते रहते हैं, हाइकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। पर जो ऐसे माउंटेन लायन है जो उजाड़ में रह रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं है, तो वो तो शाम के वक्त डस्क के टाइम पे जब थोड़ा अंधेरा रहता है उस टाइम पे घूमते फिरते हैं, शिकार करते हैं। पर जो ये घनी आबादी में लोगों के पास रह रहे हैं वो अब उनका नेचर नॉक्टर्नल हो गया है, ठीक है।